Hello students, a very warm welcome to all my lovely students here in the class. Please let me know if I'm audible and visible to everybody. Hello Niharika, hello everyone. A very warm welcome to everybody. Students, today's session is going to be on a very important poem, that's No Men Are Foreign. I know this is a poem that most of the students find a little difficult, slightly difficult, but today I'll try to explain the poem in the best way possible. Okay, we'll read the poem. So how are we going to go about in the class? First of all, I will explain the entire poem to you. Okay, I'll try to explain it in its entirety. I'll give you the important word meanings. I'll give you the poetic devices and everything that are important, and those poetic devices that can be asked in your examination, we'll pay special attention to them. Okay, then we will also have a mentee quiz. Yeah, how does that sound? Okay, so do I have anybody in my class who is new, who doesn't know me, who has not seen my face earlier? Please acknowledge in the chat. Let me know your name as well. And like the session, join my Telegram group. The link is right here in front of you. You can see that, and it will also be there in the description box. Okay, because we have to cover a lot of things today, let's get started without wasting much time. Okay, are you all ready? Have you all liked the session already? If yes, great. If not, please do that. Take some time. Now, this is my Telegram group. I have already talked about it, that if you want to stay connected and get regular updates about the sessions that I have, you can connect with me on my Telegram group as well. Okay, and the link you will find in the description box also. चलिए, तो आज की जो पोम है, which is नो मैन आर फॉरेन, सबसे पहले तो इस पोम के जो टाइटल है इसकी बात करते हैं. नो मैन आर फॉरेन, ये किसने लिखा है? कैन एनीबॉडी टेल मी हु हैज रिटन दिस पोम? या yes, of course, I'll give topper's name, do not worry. Yeah, tell me who has written this poem. Any idea? John Kirkup is the writer. If you all are not aware, students, please answer me. It's John Kirkup. Okay, do you know who this writer is? What all he has written? Any idea about it? No, nobody knows that. Well, let me tell you, John Kirkup is an English poet, and his full name is James Harold Kirkup. He also has a special quality of writing using several pen names. What is a pen name? Can anybody tell me what is a pen name? Well, pen name are those names that usually writers and used to take in order to reach to the audience. ठीक है, तो उन्होंने बहुत अलग अलग नाम लिए हैं, जैसे कि सम ऑफ हिज नेम इंक्लूड्स जेम्स फैल्कनर, देन एंड्रयू जेम्स, सम हिंदी नेम ऑल्सो लाइक आदित्य झा एंड ऑल. सो ही हैज टेकन सेवरल नेम्स टू हिज अकाउंट एंड पेन नेम्स एक्चुअली, एंड ही हैज रिटन यूजिंग देम. ठीक है, ये इनके बारे में कुछ बातें हो गई. वो एक ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं और ट्रैवल राइटर भी हैं थे, और उन्होंने मोर देन 30 बुक्स लिखी है अपने लाइफ टाइम में. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जेम्स किरकप के बारे में, जो इसके राइटर हैं. ठीक है, तो मैं जल्दी से उनका नाम लिख देती हूँ आपके लिए. स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप श्योरली पूछ सकते हैं. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. या, so this is the name of the writer, James Kirkup, and he is not just, he's a travel writer. Okay, he has written more than 30 books, 30 stories or 30 poems. I think more than 30 poems, stories. Okay, now let's get started. Hello everybody, जो भी join कर रहे हैं जल्दी से आ जाइए. और okay, so these 30 books include the 30 books that he has written. They include poems, stories, biographies, everything. Okay, now let's get started with the poem because we have to cover the poem in its entirety. तो पहले पोम पढ़ लेते हैं जल्दी से और समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं जेम्स किरकप अपने इस पूरे पोम के थ्रू. Shall I start, students? Shall I start reading the poem? Yeah. Okay, great. Give me a quick thumbs up if I'm audible and visible and understandable to you very clearly.
है ना? ठीक है बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो सिंसियरली इस क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं, जो भी बच्चे, आप अपने साथ अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर ओपन करके रखिए, और जो पार्ट्स मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, बता रही हूँ, उनको साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है? रिमेंबर, नो men are strange as an outsider, okay, somebody you're not familiar with, unfamiliar. No country is foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. All uniform refers to the army uniform that usually soldiers have, so this refers to the uniform of soldiers, okay? Now, okay, I'll not take much of your time. I'll just explain it to you in a synopsis way. So a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Now, what is the very first paragraph hinting upon? No men are strange, no countries foreign. ये सबसे पहली चीज you must note that this poem talks about the boundaries that have been created between countries, and there are soldiers fighting at the on the border, right, on in the border line. जो soldiers fight कर रहे हैं, they of course because of the divide, and that divide is because of the line that's there, that is called border. ये लोग लड़ रहे हैं, बट क्या इन दोनों के कैपेबिलिटीज में, क्या इन दोनों के थॉट प्रोसेस में, क्या इन दोनों के वे ऑफ ड्रेसिंग में, इनकी जो नेचर ने जो भी इनको दिया है, क्या उसमें कोई भी डिस्पैरिटी, कोई भी भेदभाव है क्या? जो हवा, जो सांस बॉर्डर के इस तरफ के लोग लेते हैं, वही दूसरे तरफ के लोग भी लेते हैं, राइट? सो द कंट्रीज, नो कंट्रीज फॉरेन, यानी कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोम को रिमाइंड कराना चाहूँगी, द ज्योग्राफी लेसन, ओके? ये ज्योग्राफी लेसन एक पोएम है, ओके? दिस इज फॉर क्लास 8 की पोम है, ज्योग्राफी लेसन। प्लीज रीड दिस पोम, दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ दिस एंटायर कंट्री, दिस एंटायर वर्ल्ड इज वन प्लेस, ओके? ऑल राइट, इसके अलावा एक दो रेफरेंस और है बच्चों, उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम में। द शैडो लाइन्स अगर आपने पढ़ी है, द शैडो लाइन्स इज वन फैंटास्टिक बुक रिटन बाय अमिताव घोष, okay, that also talks about boundaries and divide between countries, okay? तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, ये सब बुक्स भी पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। नाउ लेट मी टेल यू what is this poet talking about in this poem in the first stanza. So let me put it in a again to you, that he talks and he says that no men are strange. हम सब brothers हैं, we all are brothers and sisters, we all are part of this entire earth as a whole. So he talks about a sense of universal brotherhood. Universal brotherhood इस पूरे poem का एक कीवर्ड है जो आप एग्जाम में यूज करेंगे। A single body breathes, हर एक इंसान की एक ही बॉडी है जिसमें वो सांस लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक, तो ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर के इस तरफ के लोग अर्थ पे चलते हैं और उधर के लोग हवा में उड़ते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, सभी लोग अर्थ पे ही चलते हैं, राइट? सो दे हैव दिस यूनिफॉर्मिटी, उनके रहने में, उनके चलने में, उनके सांस लेने में। सो ये सब जो फिजिकल चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें दी है, उसमें कोई डिवाइड नहीं है, ओके? और अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, हम कहाँ जाएंगे? वेन एवरी वी ऑल डाई we go into the earth, we are buried into the earth, right? So we all go back to the earth, और कोई भी यहाँ से ना कुछ लेकर आया है ना लेकर जाएगा। So this kind of thought process is what he promotes. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yeah, right. Okay, they too aware of sun and air and water, and fed by peaceful harvests, by war's long winter's start. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यानी कि ये जो सूरज है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? ये सब सिमिलर है, जो फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स,
जो जमीन से निकल रहा है वो जमीन में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना. देयर इज नो डिफरेंस कि वहां का जो हार्वेस्ट है वो अलग होगा और हमारा हार्वेस्ट अलग होगा. नो, देयर इज नो डिफरेंस. ऑलराइट, सो basically students, to understand this poem in overall sense, let me just tell you that it talks about the universals of universal brotherhood, and that no person, nobody is strange, no country is different. Our bodies are the same. The air we breathe, the water we drink, the earth where we are buried, that is also the same earth. We eat the food provided by the earth, okay, during the time of peace, right? But we starve during winter, war time. जो ये विंटर स्टाफ क्या है, वॉर टाइम को रेफर कर रहा है. वो टाइम जब लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो क्या होता है, उस वक्त खाना नहीं पहुंच पाता और सभी लोग स्टार्व करते हैं. ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के दूसरी साइड वाले लोग स्टार्व नहीं करते हैं. Both the parties face similar situation. We all, like both the soldiers, both sides, soldiers of both the sides, okay, do the same kind of work. They all understand the common language of love. This is also written. Okay, now let's proceed forward and I'll connect with you. I'll give you details of poetic devices, जैसे कि like hours, like earth like this. okay, ये सब क्या है, ये simile का example है students, आप note कर सकते हैं quickly. ठीक है, ये simile है और I'll quickly tell you all other poetic devices as well. पहले इसको cover कर लेते हैं. हाँ, meaning समझ लेते हैं पहले. यहाँ तक कोई doubt तो नहीं है. okay, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. So what is that one common element that binds them together? It's love, the language of love. Both the parties need and understand the language of love. In every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, okay, betray and condemn. तो हम, अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम जो बॉर्डर के दूसरी साइड के लोग हैं उससे नफरत करो, या तो इसका क्या मतलब है कि वो और हम बिल्कुल अलग नहीं हैं. वो भी अपने देश के लिए फाइट कर रहे हैं और जो दूसरे देश के सोल्जर्स हैं वो भी अपने ही देश के लिए फाइट कर रहे हैं. तो उन दोनों के अंदर जो सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म है वो भी सेम ही है. और ये जो बाउंड्रीज हैं ये किसने क्रिएट करी हैं? रूलर्स ने. Yeah, human beings have not created, nature has not created, God has not created. It is created by human beings, right? Let us remember, whenever we are told, ये बहुत important stanza है students, you must know that dispossess, यानी कि we kind of let them go. dispossess करना, उन्हें दूर कर देते हैं जब खुद से हम dispossess करते हैं, disown करते हैं, बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. सो लेट मी पुट द वर्ड्स फॉर यू. क्रिटिसाइज, बिट्रे इज धोखा देना, चीट करना. ओके, डिस्पोजेस इज डिसओन. ऑलराइट, सो इफ यू डिसओन देम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. डिफाइल यानी कि अगेन उसे ही हम धोखा दे रहे हैं. हम किसे धोखा दे रहे हैं? अर्थ को. Alright, so I'll give you the important words one more time. Our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. तो ये हवा जो ट्रैवल करती है वो ये तो नहीं बोलती है कि बॉर्डर के बाद अब मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, यहाँ पे बॉर्डर हो गया, अब मैं इंडिया की हवा हूँ, इंडिया में रहूंगा. ऐसा तो नहीं होता ना. सो एयर, जो भी नेचुरल चीजें हैं, दे नो बॉर्डर. उनके लिए कोई बॉर्डर, कोई डिफरेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंजर. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन, राइट? रेपिटेशन है, पूरा सेंटेंस भी रिपीट हुआ है, तो उसके लिए भी हम वील रीड. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स. व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम? ये वो टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ था. Okay, so at that point in time, what did people realize? There was so much of devastation, okay, and destruction.
and the economy just went, it just kind of crashed, right? So there was so much of devastation and destruction. There was nothing good happening around. So people realize that a war can never lead to anything good. It can only lead and people will only suffer during the war and after the war. Okay, it will take them time to recoup. Fine. So this is what they talk about. Now I'll quickly take you through the important words that we have in this chapter. And last part का मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो last stanza है, let us remember that when we are dispossessing or betraying or condemning. तो ये हम जब हमसे ये कहा जा रहा है that to hate our brothers, we are actually, what are we doing? We are taking away that precious relationship that we have. Okay, we are condemning and betraying our own selves क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही इंसान ही हैं. Okay, and if we go and have a war against each other, what are we doing? We are harming the Mother Earth. We are polluting the Mother Earth. Yeah, and the fire and the dust that is raised by the war, it only ruins the purity of the air, right? It only ruins the purity of the air that we breathe. So remember that no men are foreign and no countries are strange. Okay, and there are a few words that are important, students. मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. Foreign आपने देख लिया. Foreign refers to something that is outside. अगर आपके पास बुक है तो जल्दी से मार्क कर लीजिए बच्चों. Okay, जल्दी से मार्क कर लीजिए that foreign is somebody who belongs to another country. Harvest क्या है? When you have yield को हम कहते हैं the collection or the yield of crops or fruits, उसे हम harvest कहते हैं. और उसके बाद we have starvation का मतलब समझ गए आप? starve करना बच्चों. When you starve, you do not have supply of food, that is a starvation. Labor का क्या मतलब होता है? Labor refers to work, manual work that you do. Okay, recognize, आप underline कर रहे हैं, लिख रहे हैं. I hope you all are doing that. Recognize करना यानी किसी चीज को appreciate करना, और more than appreciation, identify करना. Okay, and accept करना, acknowledge करना, recognition देना. Okay. There was a word dispossess. Dispossess refers to basically you give away something, right? You usually dispossess, disown something. Like I told you, I've written that also. Betray करना, धोखा देना, deceive करना, cheat करना, condemn करना, criticize करना, किसी को strongly condemn करना, punish करना, condemn करना. Arms का मतलब weapons को refer करता है. Defile क्या होता है? What is defile? Defile is basically to pollute something. Okay, if something is clean, you make that impure. So basically it's like कहते हैं please don't defile a place of worship. तो उसका क्या मतलब है कि आप किसी अच्छी जगह को, साफ सुथरी जगह को pollute ना करें. Then you have the word outrage. Outrage का क्या मतलब है? Shock or a state of lot of furor. Okay, so furor, shock, that is outrage. Innocence क्या है? Innocence is purity. और naive भी एक word है innocence के लिए. चलिए ठीक है, literary devices हम आगे बढ़ते हैं. जल्दी से literary devices देख लेते हैं. तो सबसे पहले rhyme scheme क्या है इस पूरे poem की? It is free verse, मतलब free verse में लिखा गया है. कोई भी poetic device, कोई भी rhyme scheme नहीं follow की गई है. A, B, B, C का sequence नहीं है. Free verse है. Okay, free verse क्या होता है? When there is no rhyme scheme, it is called a free verse. Then you have alliteration. Alliteration क्या होता है? जब consonant sound, when you have the repetition of consonant sound, it is called alliteration. Okay, so the instance of alliteration are body breathes. तो यहाँ पे क्या है? B का sound. Alliteration समझते हैं ना बच्चों? When you have the sound of consonant. Okay, so body breathes. This is B sound is there, and alliteration will usually be the first letter. Okay, the first letter. Two consecutive words and the first letter rhymes. That is alliteration. Stanza 2 में हम देखेंगे wars, winter. W again the first letter. WW is rhyming. It is producing a sound effect. So it is again an example of alliteration. Okay.
मेटाफर और सिमिली बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पोम में। मेटाफर आपने का क्या मतलब है? मेटाफर रेफर्स टू अ कंपैरिजन, राइट? सो कंपैरिजन किस किस चीज को कंपेयर किया गया है? Uniform refers to the military uniform of different countries. All right. So uniform refers to the military. Okay, the kind of people we have, representatives of the army or the soldier who are there. So उसे उन्हें यूनिफॉर्म उनके लिए रेफर किया गया है एज अ मेटाफॉर. Repetition क्या है? Repetition we can see it has been used throughout the poem. Am I right, students? Am I right? So metaphor has been used, repetition has been used several times, right? So जैसे कि आप remember, every time you see remember word there. Okay, no men are strange, ये दो बार पूरा repeat किया गया है. Stanza 5 में भी यूज किया गया है countries. Again, तो stanza 5 में भी repeat किया गया है, stanza 1 को same चीज. Okay, so this is called repetition, when entire thing is repeated twice just to bring an emphatic effect. अच्छा, सिमिली क्या है? सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ ये डिफरेंस कि मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन. You do not use like or as with metaphor. Simile के साथ you use like and as. Okay, so यहाँ पे a single body like ours, ये क्या है? Like से compare किया जा रहा है. This is simile. Is earth like this? They have eyes like us. So there is a direct comparison नहीं यहाँ पे you have more of an indirect comparison. Okay, so it is saying that जैसे हमारी आंखें हैं वैसे ही उनकी आंखें भी होती हैं. So this is indirect comparison. Clear everybody? Okay, अब एक बहुत ही important poetic device यूज किया गया है और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ बच्चों कि every poem has some or the other poetic device, right? कुछ ना कुछ तो होगा ही, metaphor, simile, personification, all of that. But the unique poetic devices that are there in the poems are the ones that you have to catch, और वही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में. तो enjambment क्या होता है? Can anybody answer? Tell me quickly what is enjambment? हाँ, बिल्कुल अभी 2 सेकंड में मेंटी कर रहे हैं. Running lines of poetry from one line to next without using any kind of punctuation. जब कोई भी पंक्चुएशन के बिना आप जंप करते रहें पूरे पोम में, उसे हम enjambment कहते हैं. ठीक है, ये आपको पूरे पोम में दिखेगा, कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया गया है. All right, got it everybody? Okay, now it's time for menti. लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, just 1 second. Okay, you have to give me just 1 second. ओके, या सब कुछ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कोई पॉइंट है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई? इज देयर एनीथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? या एवरीबॉडी टेल मी क्विकली, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? Okay, there is one poetic device that I want to introduce to you before proceeding. That is called consonants. Can anybody tell me what is a consonants? Quickly tell me. What is consonants, if you can tell me? Yeah? Till I'm showing you the code, you can join the code, call your friends for Menti. Till then I will be explaining you what is consonants. Consonants है जब consonant का sound आए आपके adjacent या consecutive words में, लेकिन वो आपके word आपके starting of the word में नहीं बल्कि कहीं बीच में या end में आए, उसे हम consonants कहते हैं. Fine. और assonance क्या है? Assonance जब you have the sound of vowel but not in the beginning but in the middle of the letter or as a middle alphabet. Okay, last में या बीच में जब आए तो उसे हम assonance कहते हैं. Otherwise it's alliteration. यही फर्क है
एलिटरेशन और एसोनेंट्स में, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है एवरीबॉडी? ओके, नाउ यू ऑल कैन ज्वाइन द मेंटी. द कोड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, 8296402. दैट इज द कोड फॉर यू ऑल. प्लीज कॉल योर फ्रेंड्स. और अभी ये आपका टेस्ट करने वाली है कि आपने सेशन कितने अच्छे से समझा. ओके, सो वील गो फास्ट. How I make questions for mentee? I create them. Yeah. Okay. Mentee code is not visible. Okay. Can any humble and kind student quickly post that code in the chat box? 8296402 is the code. ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मच टाइम. अब बहुत सारा टाइम हमने एक्सप्लेनेशन में डिवोट कर दिया, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, तभी तो क्वेश्चन आंसर करेंगे. और स्टार्ट करते हैं. रेडी? ओके, ऑल राइट. आई कैन सी मेनी न्यू नेम्स इन माई क्लास टुडे. तो बच्चों प्लीज़ जाने से पहले खुद को मुझे इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा. आप चाहें तो मेंटी टेलीग्राम ग्रुप पे भी आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Okay, the link is in the description box. Shall I start everybody? Give me a quick thumbs up and then I'll start. Okay, chaliye. Very first question will appear in front of you in just 1 second. I'm starting. Okay, Devi. Okay, the word uniforms has been used as a metaphor for, अभी हमने डिस्कस किया है 1 सेकेंड पहले, कलर्स, रेसेस, आर्मी मैन, कास्ट्स. सो यूनिफॉर्म्स किसके लिए यूज किया गया है? कैसे ज्वाइन करें? यू हैव टू गो टू menti.com एंड यूज द कोड 8296402. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी मैंने आपको दिखाया था, आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा. ओके, वेरी गुड. आई स्टिल हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स सेइंग कलर्स, रेसेस, कास्ट. क्या आपने क्लास बिल्कुल नहीं सुनी? दैट्स अ सैड थिंग टू नो कि आपने रॉन्ग आंसर चुना. बट लेट मी सी हु इज इन द लीडर बोर्ड. ऑल दोज अटेंटिव स्टूडेंट्स, लेट मी सी. Okay, so I have Dragonite at the top. Very good, Dragonite. Naman, Drishti, Purv, Ardent, Amlan is there. Sniti, Shubhi, Ipshit, Raj. All right, Ipshit, are you new in my class? I'm seeing you for the very first time. Ashmita, Rania, Mustaq. Very good students. You all are doing great. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो समझ गए ना, यूनिफॉर्म एक मेटाफर है जो यूज किया गया है आर्मी मैन के लिए, आर्मी पर्सनल के लिए. ओके, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ऑल शैल लाई? ऑल शैल लाई अभी मैंने आपको बताया. कॉन्सोनेंट्स, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या फिर पन, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे क्विकली. कॉन्सोनेंट्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया. या पन क्या होता है अभी मैं बताती हूँ, जल्दी से आप इसको आंसर कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ पन क्या होता है. पन इज मोर लाइक अ वर्ड प्ले. जब आप किसी वर्ड को उसके मीनिंग के लिए नहीं यूज करते. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप लीव्स कह रहे हैं, ओ आई विल लीव. यू हैव होल्डिंग अ लीफ इन योर हैंड, यूर सेइंग ओके आई विल लीव. सो यू डोंट मीन टू लीव द रूम बट यू टॉकिंग अबाउट द लीव. सो you just play with words like that. ओके, अच्छा इतनी गड़बड़ी. अच्छा, मेटाफर कैसे है यहाँ पे? हाउ कैन यू से इट इज मेटाफर? ऑल शैल लाई. सी, इट इज clear example of consonants. Consonants क्या होता है? When you have the consonant sound, जैसा कि आप इस word से भी derive कर सकते हैं. When you have consonant sound in the consecutive words, okay, जैसे कि all में double L है, shall also has L in it, lie also has L in it. So there is a sound effect of L. ओके, एल का एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये एल का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द
same letters used in the nearly written words, closely written words. इसे हम एक तरह का पोएटिक डिवाइस कहते हैं और इसका क्या नाम है? कॉन्सोनेंट्स. अगर L की जगह कोई वॉवेल होता तो हम उसे एसोनेंस कहते. ठीक है, उसे हम एसोनेंस कहते. और वही अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता, एंड में नहीं होता, तो उसे हम एलिटरेशन कहते. क्लियर? एसोनेंस, कॉन्सोनेंट्स, एलिटरेशन, इन तीनों का डिफरेंस क्लियर है बच्चों? ओके. मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है. पर्सोनिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. ओके, इट इज कॉन्सोनेंट्स क्योंकि एल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. लेट्स सी क्या स्टेटस है और लीडर बोर्ड में क्या किया है आप लोगों ने. दोज हु आर ज्वाइनिंग इन लेट, जल्दी से आ जाइए. ओके, गुड लेसन. अरे वाह, आपको मजा आ रहा है. ओके, सो ड्रैगनाइट, नमन, रानिया, काइंड हार्टेड खुशबू, निहारिका. कोई इंग्लिश सिखा दो तो सीख लीजिए, हम सीख ही तो रहे हैं. अस्निति, शुभी. ओके, नो मैन आर फॉरेन, गुड लेसन. ठीक है, दीपिका, तोमर, गुड. सो सम न्यू नेम्स आई कैन सी हियर. स्टूडेंट्स, क्लैरिटी आ रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन. या ओके, what idea does the poet want to convey through the poem? Universal brotherhood, peace and harmony, equality amongst humans, या फिर सारा कुछ? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप इस पोएम के सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया को समझ सके. गुड गुड गुड. तो ये जो जल्दबाजी में बच्चों ने 8 बच्चों ने क्लिक कर दिया यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यू शुड हैव रेड ऑल द ऑप्शंस. आई थिंक यू मिस्ड टू रीड ऑल द ऑप्शंस. एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव. और अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम, प्लीज इंक्लूड ऑल ऑफ दीज. ओके, करेक्ट. All right, yeah, here I'll explain one more time. Let me complete the session and then Menti के बाद I'll explain you consonants and assonants example के साथ. Dragonite is the fastest. Naman, Rania, Niharika, Sniti Mishra, no men are foreign. Okay, great. Ritisha, Rohit, Epshit, Krish. Okay, great. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. आई होप दिस इज ब्रिंगिंग सम क्लैरिटी टू योर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डज द पोएट रिमाइंड अस अबाउट इन द पोम? द मेनी वेज इन विच वी आर डिफरेंट, द मेनी वेज इन विच we are all fighting, the many ways in which we are all the same, the many ways in which we all can make peace. क्या है, क्या हमें रिमाइंड करते हैं वो बार बार, क्या बताते हैं? Think about it. This question can be slightly confusing, पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्योंकि सेंट्रल आइडिया अगर आपने चैप्टर का, पोम का नहीं समझा, यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल बी मेकिंग दीज काइंड ऑफ एरर. ओके निहारिका, ऑल राइट. यस, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट. बहुत अच्छा, वेरी गुड. आई थॉट यू ऑल विल चूज डी, लेकिन बहुत अच्छा, वेरी गुड स्टूडेंट्स. नो, ही टॉक्स अबाउट द सिमिलैरिटीज. वो बार बार क्या बताते हैं? हाउ वी आर सेम. वी ऑल्सो ब्रीथ द सेम एयर, वी ऑल्सो गो, वी आर ऑल्सो ब्यूरिड इन द सेम लैंड, राइट. हर एक चीज में वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं और सिमिलैरिटीज की बात करते हैं. बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड जॉब. लेट मी सी who is at the top. कुछ बच्चों का wrong हो गया, as I can see that. So I have Niharika who is in the lead. I have Rania. Then I have Sniti, no men are foreign, Dragonite, Naman, Ritisha, kind-hearted Khushbu, Rohit and Ayush. So हर बार एक नया winner होता है इस session में आज के. I'm liking it very much. Yeah? Okay, great. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question, fifth one on your screen everybody. Okay, all right. I hope this session is helping you all. Remember, they have eyes like ours.
Whom does they refer to in the given line? The farmers, men belonging to different countries, the women and children, none of the above. बड़ा ही simple question है, बड़ा ही simple. Just a revision. Okay, they कौन है? Who are they here? Quickly, let me see who wins this mentee. Let me see who wins. चलिए, ठीक है. ओके सो स्टूडेंट्स, ओ वाओ ग्रेट. तो पहली बार 25 प्लस स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. हु इज द विनर फॉर टुडे? एंड डू आई हैव अ न्यू स्टूडेंट और द सेम? सो आई थिंक इट्स निहारिका. And although Dragonite played very well and Dragonite was fastest for this one also, but Niharika has stolen the show today. Very good Niharika. Let's congratulate Niharika. And well done students. Very well done. You all did a good job. This is a very simple poem students. I don't think you all need to worry about it much. ओके सिर्फ आपको इस पोम में मैं आपको फिर से बता दूं किन चीज़ों का ख्याल रखना है. अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे. सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है कंपैरिजन. ओके, अगर इसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम, कंपैरिजन, सेंट्रल आइडिया, ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, और अगेन पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बता दिए. सिर्फ मेटाफर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि this particular poem is majorly a comparison between the countrymen, between the people or the soldiers of the two different countries, right, who are fighting, who are at war. और इसका बैकड्रॉप अगर थोड़ा सा जानना है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ended, there was just hue and cry, there was nothing good happening at all. So people had lost lives, they had lost family, they had gone through a lot of financial and emotional and psychological turmoil. Okay, अब अगला सेशन कब है मेरा? 11th जनवरी को 1 बजे और ये लिटरेचर ओवरव्यू एंड रिवीजन सेशन होने वाला है. मैं बता दूं बच्चों, आप लोगों के लिए अगले नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो रहा है. मैं लेकर आ रही हूँ लिटरेचर ओवरव्यू एंड रिवीजन, जिसमें हम एक क्लास में 2 से 3 चैप्टर को थरली रिवाइज करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम उन पे. तो जो भी बच्चे हैं जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी रह गई है, ज्वाइन कर लीजिए और अपने एनसीईआरटी बुक के साथ ज्वाइन कीजिएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे. 2-3 चैप्टर क्लब करके हम ये सीरीज करने वाले हैं. ऑल राइट. और आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स के बीच का डिफरेंस है. एम आई राइट? किसे किसे नहीं समझ आया कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स? शैल कॉल द tall man. ठीक है, shall call the tall man. इस सेंटेंस में कॉन्सोनेंस है या एसोनेंस है? जल्दी से बता दीजिए. क्विकली. बहुत खुश हूं मैं निहारिका. आई एम रियली हैप्पी. आई कंग्रेचुलेटेड यू सो मच. क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स, what poetic device is there in this particular sentence? Very good Sniti, very good Niharika. Others? Brilliant. Absolutely. So कैसे हमने कहा कॉन्सोनेंट है? क्योंकि L साउंड का रेपिटेशन है एंड L क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, राइट? L साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है. अब यहीं पे अगर होता the, see, the, spree. I mean, I'm just writing a random sentence. The, see, the random spree. So what is here? It's the E sound has been produced over here. So they see the spree. Okay. So you have E. What is E? Is it consonants? Is it vowel?
इट इज वॉवेल, राइट? तो ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दे सी द स्प्री, तो ई क्या है, ये एसोनेंस हो गया। ये एग्जाम्पल है एसोनेंस का, ये एग्जाम्पल है कॉन्सोनेंस का, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट साउंड इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द वॉवेल साउंड. In this case, the sound effect is because of a consonant sound, right? A consonant letter is making or causing that effect. Okay? तो इसलिए ये कॉन्सोनेंस है, ये एसोनेंस है. और सिमिलरली एलिटरेशन क्या होता है, अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कॉन्सोनेंस का और सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो रहा है तो उसे हम एलिटरेशन बोल देंगे. अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? चलिए ठीक है. आई होप टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट क्लास एज वेल. अभी के लिए आई होप यू आर लाइक द सेशन. प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा, अगर आप और ऐसे सेशंस चाहते हैं तो. और अगले वीक से ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा. जो भी बच्चे नहीं हैं टेलीग्राम पे भी आ जाइए. अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीबडी. ओके, shall I take leave? Yeah. Okay, everybody.